It's just that you fail to show it to the employer कि तुम्हारे पास वो value है. So your resume is the place to brag. If you have done anything, just लिख दो वहाँ पे कि I did this, I did this. In your resume, don't write we did this, our team did this, because we are not interviewing. तुम हो जो interview कर रहे हो, so write it from your perspective. तो यार ठीक है, अब थोड़ा सा इसे स्ट्रॉन्ग कर देते हैं पॉडकास्ट को, जैसे कि बियर बाइसेप्स कहता है। मुझे क्यों तोड़ा? इंडिया में हर किसी का सपना होता है कि वो एक ना एक बार बाहर जाके काम करे। सबका एक अमेरिकन ड्रीम होता है, या यूके, इंग्लैंड जाने का, लंदन जाने का ड्रीम रहता है। आज हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि एक लोअर टियर कॉलेज से होने के बावजूद एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वो भी आउटसाइड इंडिया। जानते हैं उनका सारा एक्सपीरियंस, एक एक चीज जान रहे होंगे, कैसे क्या प्रोसेस थी, कैसे वो अपॉर्चुनिटी मिली उन्हें, क्या रिलोकेशन का प्रोसेस रहता है, टैक्सेशन के रिगार्डिंग डिटेल्स, और भी बहुत कुछ। And वो company, one of your dream companies है, I can bet on it. Let's get started with his introduction. Firstly, thanks so much for inviting me to this podcast, क्योंकि I've been following you since a long time. अभी भी जब LinkedIn पे मुझे लोग मैसेज करते हैं कि how to get in touch with opportunities, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि यार अर्श गोयल का चैनल ज्वाइन कर लो या फिर कुशाल का चैनल ज्वाइन कर लो, and you will be just aware of all the opportunities. So it's a privilege and it's an honor कि तुमने मुझे invite किया. And secondly, about my introduction. So my name is Navin Rawat, and I'm currently working as a software engineer at Google, and mostly focused in the backend. And inside Google, I'm a part of the devices and the services organization. And so I'm basically working on those Fitbit and Pixel watches to make sure that everyone is living a healthier life. And prior to this, I was working at Oracle, and that role was also mostly focused on the backend and some DevOps. I graduated in 2021 from Veer Mata Jijabai Technological Institute in Mumbai. And about me, I like to play chess. I like to read books. I like walking in the forest. And of course, I like to go to concerts as well. And I'm pretty excited for this interview. Definitely, Naveen, thanks a lot for this brief introduction. तो नवीन देखो, इंडिया में ना क्या सीन रहता है, जब सब लोग डीएसए की प्रिपरेशन करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं कि एक टेक कंपनी में जॉब लग जाएगी। तुम्हारा कॉलेज का सिनेरियो कैसा था? तुम्हारे दिमाग में क्या था जब तुम कॉलेज पढ़ रहे थे? तुम भी यही सोच रहे थे यार मेरी भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जॉब लग जाए? लाइक व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस ड्यूरिंग कॉलेज? Yeah, so my college is not a tier 3 college. It was a tier 2 college, and you can also say ki it's also a good college because we had a lot of companies in the college. Of course, वहाँ पे Google and Microsoft नहीं आती थी, so I had to go to Google off campus. लेकिन वहाँ पे we have Amazon, Apple, and D Shaw, and all the good companies. तो मुझे ये था कि प्लेसमेंट के लिए इतना ज्यादा सोचना नहीं था, क्योंकि we already had the companies in the campus. एंड मुझे सिर्फ ये था कि जो कंपनीज आ रही हैं कैंपस में उनको क्रैक करना है. बट द थिंग विद मी वाज दैट आई स्टार्टेड डीएसए क्वाइट लेट. मैं जब फर्स्ट या सेकंड ईयर में था तो मेरे सीनियर्स कहते थे मुझसे कि डू डीएसए, इट विल बी लाइक द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू विल एवर मेक. बट होता है ना वो टाइम पे कि जब तुम कॉलेज में होते थे तुम सुनते नहीं हो सीनियर्स की, यू थिंक कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक. एंड मैं वो टाइम पे बहुत सारे गेम्स वगैरह खेल रहा था, बट आई डिडंट स्टार्ट डीएसए अंटिल माय थर्ड ईयर. लेकिन आई वाज क्वाइट लकी कि वी ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ कंपनीज इन द कैंपस. सो जब मुझे स्टार्ट में थोड़े 8-9 रिजेक्शंस मिले, उसके बाद मुझे समझा कि ओके आई शुड डू डीएसए. एंड देन I started with DSA in my third year, and then after a few months, I had the internship at Barclays, which was like 1 lakh per month. But that was because of the on-campus opportunity, and I do realize the off-campus is much harder than the on-campus one. ऐसा था कि थर्ड ईयर में जो मैंने इंटर्नशिप करी थी वो थी बार्कलेज में. एंड देन फोर्थ ईयर में जब कंपनीज आई थी कॉलेज में, आई गॉट इनटू ओरेकल. एंड देन आई वर्कड एट ओरेकल फॉर 1 year and a few months. And then I switched to Google, which was off campus. Yeah. तो गूगल की अपॉर्चुनिटी आपको मिली कैसे? Yes. So for Google, मैंने online apply करी on their careers page using referral. And then after 2 weeks, the recruiter from and I think they are based in Ireland. They reached out to me and they said, we want to talk to you. And I think, and basically उन्हें सिर्फ opportunity के बारे में share करनी थी कि जो roles के लिए वो लोग hire कर रहे थे, what roles are those exactly. And also they wanted to know more about my background कि मैं किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, and like मेरी actual background क्या है, the skills thing. And then we had some kind of screening with the recruiter 1 week after it, and they asked me some questions, what kind of projects you're working on and all the other things, and then they shared some information about the roles that they were hiring for, and it was quite good. It went quite well, and then the interviews were scheduled and all the other things. Got it. तो यार एक बात बताओ कि
आपने खुद लाइक यू वर एक्टिवली लुकिंग उस टाइम, या फिर क्या सीन था? मतलब आपको किसी फ्रेंड ने बोला यार ओपनिंग आई है अप्लाई करते, या फिर आप उस टाइम एक्टिवली देख रहे थे अपॉर्चुनिटीज? एंड आउटसाइड इंडिया ही क्यों आपने अप्लाई किया? व्हाई नॉट इन इन इंडिया? I actually failed Google twice before this. एक बार जब मैंने इंटर्नशिप की अप्लाई करती थी, तो वो टाइम पे भी मैं क्लियर नहीं कर पाया था, एंड देन इवन इन दी फाइनल ईयर। सो ये मेरा थर्ड टाइम था जब मैंने अप्लाई करी थी, एंड लास्ट टू टाइम्स मैं इंडिया के लिए इंटरव्यू कर रहा था। एंड दिस टाइम आई थॉट कि यार लेट्स ट्राई आउटसाइड इंडिया, बिकॉज अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो आई कैन ऑलवेज गो बैक, हम्म। लेकिन अगर अच्छा लगा तो आई कैन स्टे फॉर सम लॉन्ग टाइम। एंड ऑल्सो मुझे एक्सपीरियंस करना था कि इंडिया के बाहर कैसा था, बिकॉज आई स्टेड इन मुंबई फॉर ऑल माई लाइफ। तो ओके। इवन माई कॉलेज वॉज इन मुंबई, तो मैं मुंबई से बाहर नहीं गया था ट्वेंटी अच्छा। टू और 23 ईयर्स के लिए। गॉट इट, बहुत ही बढ़िया यार। अब सबके दिमाग में जब गूगल का नाम आता है ना, तो सब सोचते हैं यार बहुत भयंकर से इंटरव्यूज होंगे, प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। तो हाउ यू प्रिपेयर्ड कि भाई अब मेरे को पता लग गया है मेरे इंटरव्यू शेड्यूल होने हैं, 2-3 हफ्ते का टाइम हम्म। है। वर यू प्रिपेयरिंग एक्टिवली? आप प्रिपेयर भी कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? अगर कर रहे थे तो कैसे प्रिपेयर कर रहे थे, कहाँ से प्रिपेयर कर रहे थे? यार मैं एक्चुअली तो नहीं प्रिपेयर कर रहा था, बिकॉज आई हैड अ फुल टाइम जॉब। तो ऑब्वियसली। जब मेरी बात हुई रिक्रूटर से, तो ये बात मैंने उनसे भी कही कि आई आई हैव अ फुल टाइम जॉब, एंड फिर मुझे इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना। सो आई आस्क्ड फॉर 2 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन टाइम, क्योंकि लाइक आफ्टर जॉब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो यू नीड अ लॉट ऑफ सही। फोकस एंड टाइम, एंड फिर जॉब के बाद तुम ऑलरेडी इतने टायर्ड होते हो। तो मैंने कहा हम्म। कि मुझे 2 मंथ्स चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, एंड माय रिक्रूटर वाज सुपर हेल्पफुल। दे सेड कि जस्ट टेक एज मच टाइम एज यू वांट and make sure you're ready for the interviews. And also, they have this waiting period. So I was like, okay, if I interview, then I should give my best. सही Otherwise, I बात। should not even interview. Right? So मैं जब इंटरव्यू कर रहा था, मैं सोचा कि 100% देता हूँ, and then I interviewed at Google after 2 months, and I had all the interviews on the same day. So there were 4 rounds. Three of them are the problem solving rounds, जो कि DSA problems होते हैं normally, and the one is the Googliness, which is basically behavioral interviews. So हम्म। they just ask you about your projects, and some questions like what would you do, or tell me about a time when you had these experiences, your strengths, your weaknesses, and all the other stuff. समझ गया। नहीं तो आपने प्रिपेयर कैसे किया? कोई स्पेसिफिक लीड कोड ही करते थे? लीड कोड की 150 की शीट्स करी? हाउ मेनी क्वेश्चंस आपने यू डिड ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन ऑफ 2 मंथ्स? आई थिंक मुझे ये नहीं पता कि मैंने कितने क्वेश्चंस किए वो टाइम पे, बट आई डू रिमेम्बर कि मैं वो टाइम पे एक्टिवली सॉल्व कर रहा था, एंड हर दिन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। एंड आई वाज आल्सो ट्राइंग टू फॉलो दिस बुक, एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग इंटरव्यूज, बिकॉज समवन फ्रॉम गूगल हैड रिकमेंडेड मी कि ये बुक कर लो, एंड नॉट लाइक फुल बुक कर लो, बट उसमें लाइक काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत कॉमन है टेक कंपनीज में। सो आई वाज डूइंग दैट ईपीआई थिंग, and I used lead code, of course. Even when I was in college, I had solved like around 800 problems on lead code. So I think I had some experience with variety of problems. And of course, lead code discussion section is बिल्कुल। very good. And then you also have the interview experiences section on lead code, जो कि काफी अच्छी है. So I just looked at the interview experiences for the last 4 or 5 months, and just trying to understand कि like किस type के questions आते हैं and what you can expect. करेक्ट। So the main source was just lead code API, and also there was a website called as binarysearch.com a few years ago, but it बंद हो seems like गया। it's not there. हाँ। अब बंद हो गया, but it was pretty good. It had like a really good collection of problems. डेफिनेटली। तो नवीन एक चीज बताओ, आपने गूगल इंडिया के भी इंटरव्यूज दिए हैं, गूगल बाहर के भी इंटरव्यूज दिए हैं, ठीक है, अब्रॉड के भी, तो Yes. कोई डिफरेंस दिखा डिफिकल्टी लेवल में कि बाहर के थोड़े इजी हैं या इंडिया के हार्ड हैं, या वाइस वर्सा? नहीं यार, मतलब ऐसा होता है कि जब तुम कहीं पे इंटरव्यू करते हो, तो हम्म। यू हैव अ पूल ऑफ इंटरव्यूअर्स जो कि इंटरव्यू ले सकते हैं तुम्हारा। तो हम्म। इवन व्हेन आई वाज इंटरव्यूइंग फॉर गूगल इंडिया, ऐसा नहीं था कि इंडिया के इंटरव्यूअर्स मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। हम्म। क्योंकि जो पूल होता है, यूजुअली इस पूल से इंटरव्यूअर्स होते हैं सिलेक्ट, तो द डिफिकल्टी लेवल इज द सेम, क्योंकि यू डोंट नो कि तुमको कौन इंटरव्यूअर मिलने वाला है, राइट? सही सो द बात है। इंटरव्यू लेवल इज द सेम, एंड देन हम्म। इवन द इंटरव्यू क्वेश्चंस हैव लाइक द सेम डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि वही लाइक इट्स पॉसिबल कि तुम इंडिया के लिए भी अप्लाई करो, एंड तुम कोई और लोकेशन के लिए अप्लाई करो, यू विल गेट द सेम सेम इंटरव्यूअर। तो हम्म। द डिफिकल्टी इज द सेम बिकॉज द पूल इज द सेम। गॉट इट। आप जब प्रिपेयर कर रहे थे गूगल के लिए, तो उस दौरान सिर्फ गूगल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, या यू वर आल्सो लुकिंग फॉर अदर अपॉर्चुनिटी? यार अपार्ट फ्रॉम गूगल, इंडिया के बाहर में कोई और के लिए ट्राई नहीं कर रहा था, बिकॉज एट दैट टाइम अपॉर्चुनिटीज मिलना भी काफी हार्ड थी, क्योंकि ये जो रिसेशन वाला सीन है ना, ये वो टाइम पे भी काफी चल रहा था। एंड
even when I was living for Google, my old manager told me कि, recession wala scene hai, so just be careful because if you go to Google, it's possible that maybe something can happen. And I was like, yeah, सही something can बात है, happen. But इंडिया के बाहर में किसी और के लिए नहीं अप्लाई कर सही बात है। तो यार जब रिसेशन का इतना सीन चल रहा था और ले ऑफ चल रहे थे और इस रहा। दौरान रिस्पॉन्सेज भी नहीं आ रहे हैं लोगों को, ठीक है, तो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? मतलब व्हाट डू यू थिंक कि लोग क्या मिस आउट कर रहे हैं कि उन्हें रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं? माना सिचुएशन खराब है, लेकिन हाउ हाउ यू वर एबल टू गेट रिस्पॉन्सेज? आपने डायरेक्टली अप्लाई ही तो किया था, आपको लिंक आ गया, ऐसा क्या था आपकी प्रोफाइल में कि आपको रिस्पॉन्स आ गया? उस टाइम पे ऐसा था ना कि आई वॉज अ वेरी गुड फिट फॉर द रोल, क्योंकि जब मैंने बात करी रिक्रूटर से, तो द रोल्स जिनके लिए वो हायर कर रहे थे was based on something जिस पे मैं एक्टिवली काम कर रहा था अपने करंट कंपनी में. So the good thing is कि you need to, like, when you apply for a role, you need to make sure कि you have all the skills which are needed for that job. And of course, okay, I firstly acknowledge कि of course market is bad, and it's possible कि तुम्हारे पास perfect resume है and skills है, but still you हम्म। might not get the opportunity. But in the end, it's just the numbers game. You just apply to a lot of companies and then you get the responses. But there are a few things that you can do. The first is that you only show the relevant skills in your profile. So just say I had a master resume which had like everything that I had done in my college and also in my 11th and 12th grade, maybe some Olympiads and all the other things. And then मैं जब किसी role के लिए apply करता था, तो I just used to remove stuff from this resume to make it customizable for the opening that I was applying for. So अगर मैं किसी role पे apply कर रहा हूँ, तो I just look at each point and I see, is this relevant to this role? And if it is, then I keep it. If not, then I just remove it. And also, I see a lot of resumes now, and a lot of people use the two-column resume. But what happens is like one column is half filled, and then the other column is also half filled. So I suggest that stick to one-page resume if you don't have a lot of content. हम्म। And sometimes it's like you have the value, मतलब तुम्हारे पास value है, and it's just that you fail to show it to the employer कि तुम्हारे पास value है. So your resume is the place to brag. If you have done anything, just लिख दो वहाँ पे कि I did this, I did this. And also one more important thing, in your resume, don't write we did this, our team did this, because we are not interviewing. तुम हो जो interview कर रहे हो, so write it from your perspective what you did. And एंड अनदर थिंग कि बहुत सारे लोग ये लिखते हैं कि उन्होंने क्या किया एंड कैसे किया, बट यू शुड आल्सो राइट कि व्हाट वाज द रिजल्ट, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट यू डिड, क्योंकि दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, राइट? स्पेशली फॉर द टेक कंपनीज वो बहुत ज्यादा मैटर करती है कि जो तुमने किया उसका रिजल्ट क्या था, क्योंकि यू कैन वर्क वेरी हार्ड एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इफ यू डोंट हैव द इम्पैक्ट, देन it's not useful. So just बिल्कुल। use metrics, use percentages. अगर कुछ sales बढ़े है तो how much did it increase, just mention all of that. बिल्कुल, और मैं एक टेम्पलेट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा सबकी नीड के लिए। तो जब कोई भी स्टूडेंट ना इंटरनेशनली रिलोकेट होता है, तो रिलोकेशन का प्रोसेस इंडिया में तो पता ही नहीं है लोगों को, और डर भी लगता है कि Mm-hmm. यार रिलोकेशन नहीं हुआ तो, और रिमोट जॉब्स का भी आजकल ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है, तो हाउ वाज द रिलोकेशन प्रोसेस फॉर यू एंड व्हाट आर योर व्यूज ऑन रिमोट जॉब्स? Mhm. Yeah, relocation process was quite smooth. So firstly, when I got the offer, उसके बाद work permit वाला scene था, and then sponsorship of the visa. तो वो सब तो Google ने किया था. And then once I had the visa and जब सब कुछ हो गया था, then the flight tickets were taken care of by Google. And when I came to Warsaw, जब मैं यहाँ पे land हुआ, तो they already had booked an hotel for 1 month for me. So it was a three-bedroom apartment, and it was so big, but मैं वहाँ पे अकेला रह रहा था. And a driver came to pick me up. So airport से लेकर hotel तक वो मुझे ले गए, and he came in a Mercedes, and I was like, wow, okay, I feel like a celebrity. And मैं जब यहाँ पे land किया, तो it was snow all around, so I was like, wow, मतलब एकदम ड्रीम जैसा फील हो रहा था कि मैं एकदम न्यू कंट्री में आ गया हूँ एंड वगैरह. And then करेक्ट। Google also has this thing called destination support. So they have these agents who help you in finding the apartment and opening a new bank account and travel card वगैरह बनाने के लिए help करते हैं. And also they show you around कि if you want to buy groceries or if you buy something, then where to buy it from, and some places where you can go on weekends. So it was quite nice experience. तो यार ठीक है, अब थोड़ा सा इसे स्ट्रॉन्ग कर देते हैं पॉडकास्ट को, जैसे कि बियर बाइसेप्स कहता है। ठीक है, तो जो हाँ. डाइवर्सिटी हायरिंग है उसके ऊपर तुम्हारे क्या व्यूज है? इज इट गुड, इज इट बैड, और यू आर न्यूट्रल ऑन इट? व्हाट आर योर व्यूज? Yeah, I think diversity hiring is pretty good.
Um, but what I mean by diversity hiring is not gender-based hiring, because I think gender-based hiring is quite different. But if we talk about just the diversity hiring, जिसके अंदर की gender-based hiring is just a small part. It's not like a very big part. So when you have diversity hiring, it's actually good because when you're making some product which is going to be used by millions of users, you actually need कि तुम्हारे पास जब तुम उस प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो, जब उसकी डिजाइन फेज है या उसकी डेव फेज है, तो हर फेज में यू नीड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स कि यू नो हाउ इट विल बी यूजफुल टू एवरीवन एंड इज इट एक्सेसिबल फॉर एवरीवन, या फिर वो सभी के लिए, like is it against someone unknowingly. So to know all of those things, I think diversity hiring is very good. But gender-based hiring, I don't think it's bad though, because it's like if you do gender-based hiring, and I think if you keep the bar the same, then it's also pretty good. It's not bad. Um, Mm-hmm. but I don't have to say anything on the gender-based hiring because it's quite controversial. Got it. ठीक है, हाँ हाँ, let's not go there. Anyways, तो let's talk about student who are in their first year, और उनके लिए क्या एक जेनेरिक रोड मैप होगा कि यार उन्हें एक अच्छी जॉब मिल सके, आज नहीं क्योंकि Mhm. 3 साल 4 साल बाद जब भी वो अप्लाई कर रहे होंगे. Yeah, so I think the first thing in tech is key. If you need a good job, you need हम्म. to know two things. First is DSA, and the second is development. And these two form around 80 to 85% of your interview preparation. So the rest 20% is just your CS fundamentals, which is OS, DBMS, and all the other stuff. लेकिन DSA and Dev are the most important. तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट ईयर में ना कोई लैंग्वेज लर्न कर लो, एंड आई रिकमेंड कि C++ या जावा कर लो. एंड हम्म. I also recommend कि तुम hacker rank से कर लो, क्योंकि it's very good. It has a good UI, and then they have the levels increased gradually. तो वहाँ से तुम language सीख लो, and then in the first 2 months you can learn that. And फिर उसके बाद just start doing DSA problems. And उसके लिए भी मैं ये suggest करूंगा कि तुम hacker rank ही use करो, because वहाँ पे जो problem के difficulty levels है वो एकदम धीरे धीरे increase होते हैं. And I say this क्योंकि जब मैंने थर्ड ईयर में start करी थी lead code, तो मैंने सेकेंड ईयर में फुल ईयर आई हैड अ कोर्स ऑन DSA. एंड उसके बाद भी व्हेन आई स्टार्टेड इन माय थर्ड ईयर, इट वाज लाइक वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि मैं प्रॉब्लम रीड कर रहा था एंड देन आई डिडंट नो कि इसको सॉल्व कैसे करना है, एंड देन इवन इफ आई न्यू कि इसमें ये करना है, आई डिडंट नो हाउ टू कोड इट. सो इट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. एंड जब मैंने ये हम्म. अगर मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करता था, एंड देन आई वुड नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम फॉर 3 or 4 days, क्योंकि मुझे वो डर सा लगता था कि इफ आई ओपन लीड कोड तो मुझसे ये प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड आई यूज्ड टू थिंक कि आर्म कोडिंग इज नॉट फॉर मी. And I remember this scene कि third year में I think I had to implement some kind of BFS, and one of the professors in the lab told me कि have you implemented this? I said I know how it works, but मुझे नहीं पता कि इसको implement कैसे करते हैं. I don't know कि BFS कैसे implement करते हैं. And this is the third year, so I think like just start DSA as soon as possible, and it will be like the best investment of your time. And of course हम्म. do dev, because dev is what we do in our work. DSA इतना use नहीं होता काम में. So for dev, I suggest you just do some courses on Udemy. There's one by Angela Yu, and there's one by Cold Steel. It's a very good introduction to web dev, and then you can make your own projects, or you can do open source. But हम्म. just know that DSA and dev form like the 80% of the total interviews. तो यार आज की डेट में सब लोग डेविन से डर रहे हैं, डेविन की बात कर रहे हैं. डेविन ये एआई ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पेस में आगे बढ़ रहा है. व्हाट आर योर व्यूज Mhm. ऑन इट कि भाई क्या डेविन एआई रिप्लेस कर सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को? माय स्ट्रांग ओपिनियन इज नो, एटलीस्ट इन द नियर Mhm. फ्यूचर. बट व्हाट आर योर व्यूज? I think वो तो लाइक रिप्लेस नहीं कर सकता एटलीस्ट इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, क्योंकि जब तुम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, देन इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ फेजेस, एंड यू नीड टू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल कि क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एंड देन यू हैव द डिजाइन एंड स्टफ. सो आई डोंट थिंक एआई उस लेवल पे पहुंचा है कि वेयर इट कैन डू एवरीथिंग, राइट? बट it's possible that maybe in 10-15 years it will be able to replace us, but it will not replace the top layer. Maybe it will replace the bottom 20 to 20% of the software engineers जो कि एकदम repetitive वाला काम करते हैं, which doesn't हाँ. involve critical thinking वगैरह part. हम्म. क्योंकि we already seen, right, जो लोग एकदम repetitive काम कर रहे थे, जैसे um, I don't know, जो एकदम low level होते हैं, like, तो वो part I think AI can replace, and it's possible कि in the next few years it also replaces. But I have this strong view on AI कि you should use AI to fasten your learning. So I'm just मैं use करता हूँ AI. If I have some question, I just go to Bard or just go to ChatGPT and
just Mhm. type the question, and it's really fast. Like if I want to learn something new, Correct. I use that AI to learn something, and I'm like explain it like five. What does this mean? Why do we do this? So just use AI to your advantage, and there's no need to fear about it. So यू मेंशन कि तुमने जब हम बात कर रहे थे ये बताया था तुम इंटरव्यूज भी लेते हो, ठीक है? तो Yes, व्हाट yes. डू यू थिंक, व्हाट आर योर टिप्स फॉर द पीपल हु कैंडिडेट्स के लिए क्या टिप्स होंगी तुम्हारी तरफ से? Yes. So actually, the very first important tip is that do mock interviews before you give the actual interviews. क्योंकि ऐसा होता ओके. है ना कि I've seen candidates जो कि interviews में आते हैं and then they are stumbling या फिर you know they look visibly scared क्योंकि उनको लगता है कि okay we have like अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो it will be like such a big opportunity जो तुमने खो दिया वगैरह. So do mock interviews. I know कि interview stress is real, so just do mock interviews. And हम तुम्हें जज नहीं कर रहे हैं कि like you are scared so you're not a good candidate. Of course we try कि हम तुम्हें एकदम comfortable बनाएं and all the other things, but it would be good कि if you do some mock interviews so that you're already comfortable, क्योंकि वो ये भी affect करता है कि तुम सोच कैसे रहो. And if you don't have any stress about the interview then you will think much better. So just give some mock interviews. And secondly is the mindset कि the interviewer was in your shoes a few years ago. क्योंकि अगर interviewer तुम्हारा interview ले रहा है तो at some point even they interviewed at that firm. So the interviewer is not trying to fail you, and they know कि if you get the job, then it's like a life-changing opportunity for you, right? Because it changes so many things. It affects not you, but your family and maybe the generations to come. So करेक्ट. interviewer, they are not trying to fail you, they are trying to pass you. And so you need to have this thing in mind, and you need to assume positive intent, right? And another thing is that a lot of people say that in software engineering, typing speed doesn't matter a lot. But I've seen candidates who think a lot about different approaches, and then they come to the final approach in around 35 or 36 minute mark, and they know, okay, it can be solved this way. And it's amazing to see कि वो लोग 2-3 minute में they just flesh out the whole code, and with explanation कि okay, this line of code does this line of code does this. And I'm just super amazed at these candidates. Now if you didn't have a good typing speed, then it's possible you will not be able to write the full code. So I would say कि just take 10 minutes of time out of your schedule every day and just try to have like a typing speed of around 55 or 60, and it's very good because if you know the solution then you should be able to code the solution in like 2 or 3 minutes, and then just go through a test case. And another thing is like try to modularize your code when you're writing. So a lot of times this happens that the code is actually pretty big. In that case, if you modularize, तो तुम ऐसे कर सकते हो कि just write some method, write some signature, and tell me कि okay what this method is supposed to do, and just use that method in your actual function. So like you करेक्ट. have to write only the meaty part of the code, which is like the main logic, and बाकी सब like तुम ये कर दो कि okay I'm just using this function and this does this. And अगर last में time बचता है तो you can always implement it. Go for it. But Yeah. don't try कि तुम फर्स्ट चीज में एक ही मेथड के अंदर सब चीज लिख रहे हो. Don't try to do it. Just try to Got it. modularize, split it into methods. Got it. And yeah, that's probably it. तो लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, नवीन, Mhm. कुछ स्पेसिफिक और ऐसी टिप्स हैं जो तुम देना चाहते हो एस्पिरेंट्स को who want to get into big tech company? Yes, yes. I think I would say कि what most people don't realize is that 1 year of time is a lot of time to drastically change yourself. Irrespective of तुम अभी कहाँ हो, right? Maybe you're Mhm. jobless, or maybe you're earning quite less. But I've seen people transform their entire lives in just 1 year. Just give yourself to the process, and work hard, get rest. But if you give yourself, and if you just work on something for 1 year, then 1 year is a very good amount of time, and you can just change your Mhm. life. And another thing is you should also surround yourself with people who have the same goals. Because I think what happens is when a lot of folks join college, या फिर जब वो लोग corporate join करते हैं, तो they have a lot of stress and stuff. And with stress, they start drinking or they start smoking, which is not good. So just try to stay away from it, and just be with people who have the same ambitions as you. And yeah, and maybe that's just my thing. Maybe one more thing is that be kind to everyone, because everyone is facing like their own battles, and you don't know कि किसके लाइफ में क्या चल रहा है, even online, या फिर जो भी तुम्हारे closest friends हैं, because humans are very good at hiding things. So just be kind to everyone, be nice to everyone. And Yeah. that's it. Thank you. Yeah.
थैंक्स अ लॉट नवीन फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज नवीन से कनेक्ट करें, उनकी सारे जो सोशल हैंडल्स हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।